हाँ जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अहमद और आज हम बात करेंगे खैर बात क्या करेंगे। देर इज़ जस्ट द सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड जो आप डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो we're gonna recreate some ideas और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी in the previous videos। तो लेकिन that is a constant thing for some people, and यानी मैंने जैसे अपना बताया कि it came to a point that self actualization was not gonna let you be even happy in the moment, right? तो अब इस पॉइंट पे आप या तो like why did you not change in that moment? Why did you not take one small step जो uh, एक छोटी सी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसी मीटिंग सेट कर ली या कोई ऐसा चोर कर लिया, कोई ऐसी फ़ोन कॉल कर ली जो पेंडिंग थी, जिसके बाद व्हेन यू गेट टू योर बेड तो यूर लाइक ओके टुडे वाज नॉट अ इंटायर वेस्टेड वीकेंड। मैंने जो है वो uh, यानी एटलीस्ट आई गॉट दिस डन। तो हाईलाइट फॉर द डे ना। अब आप घूम रहे हो, नाउ यूर लेट्स से यूर प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन द अदर हैंड एंड आप नहीं कर रहे, you didn't do it what you were supposed to do, and you're just watching another episode of uh, पुराने टीवी शोज के नाम लूँगा, हाउ आई मेट योर मदर, बिकॉज लोग अभी भी वो दोबारा फ्रेंड्स लाइक even I've watched it so many times. So we're doing that instead of just getting on our computer and doing a little research जो आपके पास existing resources हैं उसको use करते हुए आप यानी you could have made better use of your day, the same amount of privilege that you have, the same amount of energy that you have, but just for you just did an action that was more for your well-being instead of just pleasure in that moment। तो एक इसको आज टर्म दे रहे हैं एंकरिंग के नाम से, कि यानी हम क्या टर्म दे रहे हैं, दिस इज a very well known term everyone knows about what an anchor is, and it weighs you down, it stops you where you are। अब ये it's very good in certain situations के जहाँ पे when you need to hold yourself down, लेकिन अगर आप उस मोमेंट में एक वो छोटा वाला स्टेप नहीं ले रहे that was supposed to get the thing done, या आपको वो साउंड स्लीप के लिए आपने वो कॉल नहीं की, अब वो आपके दिमाग पे है, तो but you were anchored by something, this is much more comfortable, so you were anchored by something that was not letting you in that moment be satisfied कि I'm not in a state of well-being। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। My thoughts on that, like कि अच्छा, very important thing, like अभी you know that you're full of ambition and all the things in the world are still out there, the opportunities are endless, सब अपनी जगह पे, लेकिन अब आप अपने आगे पीछे फिर भी देखेंगे that there are certain people who fail, and uh, it's not like they were bad at what they were doing, you know, they were really good at studies, they did well, and
लगता था ना कि ये लोग कुछ कर जाएंगे and they will make something of themselves. लेकिन like as time passes, um, कुछ भी नहीं रहता उनके पास and uh, यानी अल्लाह बचाए इससे, इस स्टेज से सबको, that you feel so much that it is to that point. But the examples are there. You don't have to look too far, um, if you think of it like that. So there, now these people are failing. अगर आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली अप्रोच करते हो और लर्निंग एटीट्यूड की वजह सिर्फ अपने ऊपर रख के सोचते हो, तो मे बी, just maybe they're failing so you don't have to, you know. अब ये थोड़ी controversial सी बात है, but of course if you're gonna think of it with a negative approach तो है definitely. And now let's say आपकी immunity weak है, right? So you're prone to illnesses. मौसम भी बदलेगा तो you're gonna become ill, you're gonna be sick, आपको कोल्ड हो जाएगी, फ्लू, यू नो, ऑल दैट. तो अब आपका कोई वीक एरिया था, इम्यूनिटी थी, जो दैट वाज जिसकी वजह से यू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलनेस, राइट? तो अब इसी चीज़ को आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखें. आप इमोशनली वीक अगर कहीं रह गए हैं, तो या physically you're not strong enough and you're really skinny and you see the next guy and you're like, oh man, uh, या फिर mentally weak है कि hey, I didn't get that, could you know, tell me that again? Yeah, if a difficult situation arises so you're intellectually weak, यानी you're not able to handle that situation very well. तो कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं एक वीक एरिया रह गया था, जो आपके ग्रोथ और आपके नर्चर के टाइम पे उस तरह डेवलप नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था. कोई ना कोई एक क्लास थी जो आपने मिस कर दी ना. अब बड़े होते हुए everyone has different circumstances. Someone is a very good businessman, they have everything, लेकिन uh, they're bored at night, they don't have a friend to talk to, they don't have anywhere to go to, they try driving around but कुछ कर नहीं सकते, फिर कोरोना है, यू नो. तो अब आप पूछो क्या सीन है, दोस्त मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यू नो, I'm gonna, अभी देख भाई क्या कर रहा है. तो अब इस जगह पे आप, क्योंकि कोई चेंज लाई नहीं, आपने अपने वीक एरियाज इम्प्रूव किए नहीं, तो सिर्फ बातें की, तो देयर वर नो रिजल्ट्स. लाइक टॉक इज नॉट रिजल्ट्स. कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज, लाइक थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड यू, आप उससे अडेप्ट करें, उसको कोप करें. दिस इज what is gonna bring results. आपको results चाहिए, सही है. तो आगे बढ़ते हुए, like not to go in too much detail there, क्योंकि examples are so many and हर कोई अपने ऊपर रख के उसको 10 तरह से सोच सकता है कि, you know. लेकिन reflection, the more you reflect the more crazy you get, क्योंकि आपको अपने अंदर के डीमंस और ज़्यादा क्लियरली दिखना शुरू हो जाते हैं ना. और वीकेंड पे the only thing I did not do attitude change wise is I did not journal, like I did not write things down.
I came for work थोड़ा सा, तो उस टाइम पे I had a few things on my mind, got it said done. लेकिन uh, now that I'm approaching it as the way it was intended, so this is different than uh, यानी क्या कहना चाहिए right now actually, to be very honest, अगर अब मैंने क्योंकि I talked about my situation uh, and the journal specifically के weekend पे नहीं किया और ये सब, तो उसके साथ भी जाहिर सी बात है there are costs associated with it, and that have to be paid, or mm, ये बहुत डीप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज आगे का अच्छा सही है. अब you're in a situation, आपको पता है कि भाई uh, 1 second, I'm just what? Oh, I thought this was already done. Okay. Shit. Hmm. Okay, sorry for the long pause. सही है सही है सही है. So we've talked about like things that are gonna be holding you back in certain situations. But you have to be आप उसको you have to be a critical thinker, एनालाइज कर रहे हैं, a lot of reflection, जिसके बारे में एंड में बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट, कि दिस इज when you do that properly, तो only then things start to channelize, because it is very important to show the work. अपने आप को ही दिखाएं कि भाई देखो, this is what has happened, this is what I've done, this is what else needs to be achieved in order for the maximum potential of the day to be reached. सही है. And some people have this ability, सही है, they're adapting to situations and react नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से respond कर रहे हैं, और जो है cultural change, society change, as it's coming, they're anticipating the change and they're ready for it. This is all very good. Uh, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये तो इम्प्रूव करें ना, दे मस्ट ऑल्सो बी लर्निंग न्यू थिंग्स, ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट, एंड इन अ वे कि जो है they're up to date and they're just to stay ahead of things. Now let's talk about people like me at the very least. मैं अपने आप को perfect नहीं समझता. On a path to learning to improve कहूँगा, to be very specific अगर ना, तो now there are weak areas in life, जिस तरह की भी weakness है भाई आपकी, if not improve over time, आपने क्लास मिस की है, अब आप बड़े होते जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो, आपके challenges grow कर रहे हैं, आपके circumstances change हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे, तो फिर वो नज़र आने लगेगा, because things will get out of control and you'll feel it. सही है. कोई मिसिंग एलिमेंट अगर रह गया था और वो इट इज़ होल्डिंग यू बैक इन सिचुएशंस, तो ये तभी हुआ था जब आपका ग्रोथ और नर्चरिंग का टाइम था. अब आपका इस पॉइंट के ऊपर ग्रोथ माइंडसेट अगर नहीं है, तो फिर आगे की बात करना बेकार है. एंड बिकॉज अब अभी भी फिर कहो कि भाई नहीं, इट इज़ अ स्किल, आई कैन लर्न इट, मैं कर लूँगा. मुश्किल है, आई नो मुश्किल है, लेकिन और ग्रास्प करना भी आसान नहीं है.
इफ़ यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस बिट यहाँ तक, तो इसका मतलब है कि एक लाइक माइंडेडनेस का फैक्टर है जो without saying anything specifically, without being really clear about things, इतना blunt करके भी अगर आपको समझ आ रहा है तो means that you are headed somewhere. तो kudos to that. And ठीक है, तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो you will slip, like that's for sure. आपने time and time again life presented you with opportunities and you did not adapt. अब आपने weakness को भी बढ़ने दिया. आप if you had started like working on it तो it would have been different, right? तो अब यहाँ से बढ़ना है, and और ये सिर्फ this is just inability, यानी आपके अंदर आप capable नहीं थे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, वेरी हार्शली पर, ठीक है, ये इसकी वजह से था. यू स्लिप्ड बिकॉज यू डिडंट लर्न व्हेन यू वर सपोज टू, एंड विद टाइम यू डिडंट अडैप्ट, सो यू स्लिप्ड एंड फिर यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. अब कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं यहाँ से कि भाई ठीक है, ये सब सही है, समझ आ गया कि हर किसी को कोई ना कोई चीज़ रोक रही है जो वो एक स्टेप भी नहीं लेने दे रही ना, और प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड ऑल द वे एंड वेल बीइंग ऑन द साइड, और जो है डेली टू शो अप विद दैट स्माइल ऑन योर फेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये नहीं पॉसिबल. इट्स नॉट गोना बी, इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट, at least not every day. So the change would come inside out. Sorry. अगर लाइक चेंज इनसाइड आउट आ रहा है, अब आपने अपने ऊपर काम शुरू कर दिया, क्योंकि होता ये कि अलार्म्स तो पहले से बजना शुरू हो जाते हैं, सही है, हे ड्यूड समथिंग्स रॉन्ग, आपने ये गलत हैंडल किया, या यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड, यू स्क्रीम्ड, यू weren't supposed to, and यानी you could have handled it better. अलार्म्स बज रहे हैं, फिर इसका अगला स्टेप ये है कि यू मेस्ड अप थोड़ा सा ज़्यादा, या फॉर अ सर्टेन समवन वेयर आपको क्रिटिसिज्म मिला, तो अलार्म्स गोइंग ऑफ इन योर हेड एंड यू गेटिंग क्रिटिसिज्म नंबर 2 is these are signs, these are from nature, take them take them positively. और इट्स नॉट लाइक कि आपके अंदर कोई कमी है या मेरे अंदर कोई कमी है और होता ही नहीं है. आप कहें कि भाई इट्स अ स्किल एंड मैं ध्यान रखूँगा और कर लूँगा ना. तो अभी तक के लिए दिस इज़ व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि बी इन एवरी सिचुएशन being the first one to say, hey, what happened, like how can I fix it, like can I help, or um yeah, यार ये मुझे सही से नहीं समझ आया, you can even ask for help, it's not a bad thing. And hmm, closing, अच्छा, the thing is that there is more to say on this, लेकिन we would not have for today. The way I lined things up is that uh, someone had to reschedule, और उन्होंने अपनी मीटिंग अर्ली करा ली है, तो it took a good 30-minute chunk out of this. तो अच्छा हाँ, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे बिकॉज कुछ रेजिडुअल थॉट्स रह जाते हैं, और जो डे एंड पे लाइक व्हेन यू रिफ्लेक्ट अगेन एंड यू डू अ जर्नल, तब तो उस टाइम पे देयर आर थिंग्स टू से एज वेल.
तो there I'm gonna keep on switching it up till I see what works, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो करनी है और वेरिएशंस लाके हम देखते रहेंगे, क्योंकि इसका एम तो कुछ भी नहीं करना, एम कुछ करना ही नहीं है भाई, अवेयरनेस नहीं फैलानी, आपको सब आता है और कंटेंट कोई नहीं है, यानी these things people talk about way better on TED Talks, आप जाके देख लें। कहते हैं कि यानी आपकी जो अर्ली ऑन लाइफ में मिस्टेक्स आती है ना, वो आपको सिखाने के लिए आती हैं। लाइक द पर्सन आई एम टुडे इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माई लाइफ। अब इसके अंदर भी आप इन द लेटर पार्ट वी विल टॉक अबाउट द regrets associated with those mistakes, लेकिन क्योंकि since we are only taking it positively, तो आप जहाँ भी हो जो भी हो, you learned from it, you shaped yourself accordingly for the next time, and early on आपने सीख लिया कि भाई ऐसा टाइम आएगा तो ऐसा करना है, strategy early on हो गया ना। तो those mistakes are very important to make, go out there, make them, don't be afraid of that, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि यार I'm getting a phone call, gotta, I'll call them back right away, I don't know if it paused or what। खैर biggest mistake that we make, कि भाई आप यही नहीं मानते ना कि मैं गलत हूँ, कीप एन ओपन माइंड और बस सुन लो अगले को कि अगर ये क्रिटिसिज्म वाली चीज़ तो नहीं है, टू टेक इट पॉजिटिवली, और क्या कहते हैं, लाइक दिस इज वाई यू विल फेल मोर इफ यूर लाइक यू नो आप गलत और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, तो ढूंढ लो लाइक व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग के हे ये ऐसे ऐसे happened, it did work out nicely, but was it also the right thing to do? Yeah, was it also the best outcome for everyone? Did everyone win? सबको अपनी win के अंदर associate करना भी बहुत important है। Like you can't try to win alone, you have to move forward and make sure कि सब जीतें, all everyone that associated with you, और यानी ज़िद्दी स्ट्रॉन्ग हेडेड है ना आप कि भाई नहीं सीखना ना, यानी मैं सही हूँ, तो नहीं होगा। फ्लेक्सिबल बंदा रेडी होता है सीखने के लिए, और जो बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है वो जस्टिफाई करता रहेगा कि भाई ये हो गया था सर, मैं यहाँ पे था, वहाँ पे फंस गया था, और दिस एंड दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हाटएवर देयर बैटल्स आर, जस्टिफाई करेगा, अब वो एक सेकंड के लिए सोचेगा भी नहीं ना। And we're gonna stop it right here. This is a very sweet place to stop tongue twisters for me, और कहने का मकसद ये कि दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आप इस पॉइंट पे इतना सोच सकते हो कि एटलीस्ट थोड़ा सा सेल्फ एनालाइज करना तो शुरू करें ना। फिर मोर ऑन दिस लेटर, ख्याल रखिएगा, बाय बाय। It's not stopping.